Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we shall be starting a new and very interesting topic which is called lines and angles. Let's get started with this topic. Hope you'll enjoy it. Friends, हमने प्रीवियस चैप्टर यानी यूक्लिड्स ज्योमेट्री में देखा था कि दो पॉइंट्स का होना ज़रूरी होता है एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए. दैट इज़ अ मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट. हमने कुछ एक्सियम्स भी देखे थे जिनकी हेल्प से हमने और एक्सियम्स एंड स्टेटमेंट्स प्रूव की थी. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट एंगल्स जो बनते हैं दो लाइंस के इंटरसेक्शन से. एंड ऑल्सो वील बी लर्निंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. दैट इज़ जब एक स्ट्रेट लाइन दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग पॉइंट्स पे. अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ. जैसे जो क्लॉक्स या वॉचेस होती हैं उनके सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ एंगल्स पर होते हैं एक दूसरे के साथ. सपोज इट्स 3 PM और से 3 AM. व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड? यू विल फाइंड दैट द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एट बोथ टाइम्स. Similarly, when the hour hand is at 9 and minute hand is at 12, angle between hour and minute hand is at right angle. Okay, tell me, what is the magnitude of the angle when the hour hand is at 6 and minute hand is at 12? At that time, the angle is double of the right angle, that is 180 degrees. Similarly, जो scissors होती हैं उसके blades के बीच भी कुछ ना कुछ angle बनता रहता है when you use it for cutting something. हमारे लैपटॉप के कीबोर्ड एंड स्क्रीन के बीच भी एंगल्स बनते हैं. हट की रूफ के बीच कुछ एंगल्स होते हैं. फ्रेंड्स, एंगल्स आर एवरीवेयर, ऑल अराउंड यू. एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ एंगल्स वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग टू बिल्ड शिप्स, आर्किटेक्चर्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी और एनीथिंग. ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, हम फिज़िक्स में दो बॉडीज़ के बीच का फोर्स मेजर करते हैं. कौन सी बॉडी किस पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है. तब हम फोर्स का इफेक्ट एंगल के बेसिस पे डिसाइड करते हैं जो दोनों बॉडीज़ के बीच बनता है. हम लाइट के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में रे डायग्राम्स बनाते हैं. लाइट किस एंगल पर रिफ्लेक्ट होने पर कहाँ जाएगी या रिफ्रैक्ट होके कहाँ जाएगी वो देखते हैं हम. तब भी वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स. Okay friends, I hope you all have understood the necessity of angles in real life. Now friends, do you know what is an acute angle? An acute angle is an angle of magnitude greater than 0 degree and less than 90 degree. What is an obtuse angle? An obtuse angle is an angle with magnitude greater than 90 degree and less than 180 degree. Now we'll be doing some revision. If you can recall, a line segment is a part of a line having two endpoints. Also, a line segment with only one endpoint is called a ray. एक line segment AB को हम represent करते हैं as AB with a bar on it and its length by simply writing AB. A ray is denoted by putting a one-sided arrow on AB and a line segment can be denoted by putting a two-sided or two-headed arrow on it. Now, a new term we come across is collinear points. What are collinear points? If three or more points lie on the same line, they are called collinear points. I repeat, if three or more points lie on the same line, they are called collinear points. That is, अगर तीन या तीन से ज़्यादा points एक ही line पर located हैं एक दूसरे से कुछ finite distance पे, then they are collinear points. हम ऐसा भी कह सकते हैं that a line is nothing but a group of infinite collinear points. अब फ्रेंड्स, हमने अभी देखा दैट अ रे इज़ अ लाइन सेगमेंट हैविंग वन एंड पॉइंट. जब दो रेस को हम एंड टू एंड मतलब एक रे का एंड दूसरी रे के एंड से जॉइन करते हैं वी गेट एन एंगल. अब जो दोनों रेज हैं दे आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड दोनों रेज और आर्म्स का मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल. वी जस्ट लर्न दैट एक्यूट एंगल्स आर ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 90 डिग्री. Obtuse angles have magnitude between 90 and 180. Now you must be knowing very well a right angle is one that measures 90 degree. A straight angle is one that measures 180 degree. Now what is a reflex angle? A reflex angle is one that has measure between 180 degree and 360 degree. That is more than 180 degree and less than 360 degree. Now what are complementary and supplementary angles? The angles whose sum is equal to 90 degree are called complementary angles. For example, 60 degree and 30 degree are complementary angles as they add up to 90 degree. And the angles whose sum is equal to 180 degree
are called supplementary angles. For example, 120 degree and 60 degree. These are supplementary angles. इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं that the alphabet C comes before S and also 90 is less than 180. इसलिए C for complementary represents sum equal to 90 degree and S for supplementary sum इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं that the alphabet C comes before S and also 90 is less than 180. इसलिए C for complementary represents sum equal to 90 degree and S for supplementary sum equal to 180 degree. Now tell me, when do we say that two angles are adjacent? We say that they are adjacent when they have the same vertex or a common vertex and one common arm. Also, the non-common arms should be on the opposite sides of the common arm. इसका मतलब सपोज एक पॉइंट है O, वहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ की OA. अब उसी पॉइंट को वर्टेक्स लेते हुए AB से 30 डिग्री के एंगल पे एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे OB. Now taking OB as base and O as vertex, we draw one more line segment OC at an angle of 45 degree from OB. Thus you will see that for both the angles AOB and BOC, the common arm is OB and non-common arms are OA and OC that are on opposite sides of OB. Hence, both these angles are adjacent to each other with O as their common vertex. Now it is very clear that the sum of these adjacent angles is equal to the measure of the angle between the non-common arms. That is, जो हमारे non-common arms थे OA and OC, उनके बीच जो angle है that is equal to the sum of angles AOB and BOC, which gives us angle AOC is equal to angle AOB plus angle BOC. अब अगर ये जो दो एंगल्स हमने लिए थे 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ हमको चेंज कर दें सच दैट उनका सम हो जाए 180 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, टेक वन एंगल इक्वल टू 60 डिग्री एंड अनदर इक्वल टू 120 डिग्री. These angles are adjacent but are called linear pair of angles since they are adjacent as well as they give the sum equal to 180 degree. Also, we came across a term called vertically opposite angles in the previous classes. Vertically opposite angles are the angles opposite each other when two lines cross. Vertical in this case means that they share the same vertex or corner point. It does not refer to the usual meaning of up-down. Suppose A and B are vertically opposite angles. The interesting thing here is that vertically opposite angles are equal. That is, A degree is equal to B degree. In fact, they are congruent angles. Also, four angles originating from the same vertex giving sum equal to 360 degree are actually two pairs of vertically opposite angles. You can draw and prove yourself. Now let me give you a question to fuel up your brain a little. Suppose you are given a set of four angles that are sharing the same vertex. If one of the angle measures 50 degree, what is the measure of the other three angles? Now keeping in mind the statement I just told you that four angles originating from the same vertex giving sum equal to 360 degree are actually two pairs of vertically opposite angles. So let's proceed. Let the three angles to be found be A, B and C degrees. Let angle B be opposite to the given angle of 50 degree. Because B degree is vertically opposite to 50 degree, it must also be 50 degree. Now since a full circle measures 360 degree, so that leaves 360 minus 2 into 50, which is equal to 260 degree. Now angles A degree and C degree are also vertically opposite angles, so they must also be equal, which means they are 130 degree each, that is half of 260 degree. So this was an example problem on vertically opposite angles. Now what are intersecting and non-intersecting lines? Intersecting lines are two lines that share exactly one point, and this shared point is called the point of intersection. Now non-intersecting lines are the lines that never meet or cross. They are non-convergent, that is, they are parallel, which means being everywhere equidistant and not intersecting. And that is because parallel lines never converge, that is, they never meet at any point. So this was all for this session of lines and angles. I hope you enjoyed this session. For any queries or information, you may visit the following link. Thank you.